Hi you guys, what's up? I'm Ruchi and welcome back to my channel. Firstly, thank you so much for all the love and support to my very first video on YouTube. If you haven't seen it, please go check it out. I'll link the video in the description box. So yeah, so for today's video, we are going to talk all about confidence. Yes, basically these are the ways that I have implemented in my life in order to boost up my confidence. So I thought, why not to share with you all. So yeah, if you're interested, then please keep on watching. So very first, we are going to talk about comparison. Yes, let's start with a very interesting example. Many of us have seen the movie MS Dhoni, The Untold Story. तो उसमें एक शॉट है, एक सीन है जहाँ MS अपने रणजी फाइनल्स खेल रहा होता है एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम हार जाती है. यस, एंड व्हेन ही रिटर्न बैक उसके फ्रेंड्स पूछते हैं क्या हुआ मैच में, तो वो एक लाइन कहता है जहाँ हम लोग मैच क्रिकेट ग्राउंड में नहीं बास्केटबॉल कोर्ट में हारे. यस, अगर आपको ये सीन नहीं याद आ रहा होगा तो आई इंसिस्ट यू टू गो एंड वॉच दिट सीन, सो आपका वो फ्रेम पूरा क्लियर हो जाएगा. So coming back to the basketball court, उसकी पूरी टीम excluding MS obviously started comparing themselves with युवराज सिंह. Yes, क्या वो capable नहीं थे, क्या वो talented नहीं थे? Obviously they were that capable and talented that they were competing him in the same match. But गलती कहाँ हो गई? उन्होंने compare करना start कर दिया कि नहीं यार, I don't have that attitude, मैं नहीं कर पाऊँगा compete उससे. I may not be able to compete with him. Yeah, I don't have like that swag like he has. So result क्या आ गया? So conclusion, basically what's the conclusion? Compare करा इसलिए lack of confidence हो गया. Lack of confidence leads to the loss of match. So that the most important point which I want to include in all this is that किसी की अच्छी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करना इज़ अ वेरी गुड थिंग. किसी की अच्छाइयों को अच्छा कहना इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. बट द टाइम यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ हिम और हर, फिर वो सब गलत हो जाएगा. मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2 इज टू एलिमिनेट नेगेटिविटी और एलिमिनेट नेगेटिव पीपल फ्रॉम आवर. Knowingly, unknowingly, we have these people in a very own circle who pulls you down at any cost. मजाक मस्ती में, टॉन्ट में, दो वो उनका इंटेंशन होगा भी या नहीं होगा, बट इट हैपन्स. एंड पीपल लाइक अस, दोज आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, इट अफेक्ट अस एंड वी जस्ट गिव इट अप बाय सेइंग मुझसे नहीं होगा. क्यों? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. वाई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिविटी इन आवर लाइफ. सो अच्छा है, maintain a healthy distance between with these kind of people. Next, now this is the thing which may sound odd to many of the people, but trust me guys, if you think to give it a shot, आपका confidence यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा. Trust me. And yes, that's your appearance. Now I'm not asking you to go and buy expensive clothes or branded clothes or even spend hours in parlors and salons or beauty spas, but you have to get yourself a basic knowledge of color coordination, prints, patterns and so on. For an example, मान लो if you are a participant of any group discussion और अगर आपको कहीं presentation देना है, don't wear too loud colors that will draw the entire attention from what you are speaking. And personally what I feel, when you dress well you feel good, and when you feel good your confidence level just flies up. Moving on to point number 4, and that is to grow your knowledge. Yes, example, मान लो आपको किसी से मिलने जाना है या किसी फॉर्मल मीटिंग पे जाना है, तो थोड़ा सेल्फ एनालिसिस कर लो, थोड़ा उस सिचुएशन, उस मोमेंट के बारे में अपना नॉलेज थोड़ा सा बिल्डअप कर लो. क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वाई, व्हेन, इफ, व्हाट वाला जो 5 W's होता है उसके बारे में थोड़ा सेल्फ एनालिसिस. दैट इज Many of us face stage fear. Yes, बहुत बार होता है कि हम लोग नॉलेज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमको हमारा खुद का इंट्रो भी देना होता है अगर स्टेज पे जाके, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ड्रॉप हो जाता है. क्यों? फर्स्ट, एक तो हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं. सेकेंड, अजम्पशंस हम बहुत करते हैं. मान लो आपको स्टेज पे जाके इंट्रो भी देना है, तो एक चीज़ आप मान लो कि आप जो भी बोलोगे स्टेज पे जाके, दैट इज़ गोइंग टू बी द अल्टीमेट ट्रुथ. क्योंकि सामने वाला आपके बारे में कुछ नहीं जानता और आप जो कहोगे दैट विल बी द अल्टीमेट ट्रुथ.
And there's a very thin line between confidence and overconfidence. और पर्सनली मुझे लगता है अगर आप कॉन्फिडेंस के एक स्टेप यहाँ भी हो ना तो भी चल जाएगा, बिकॉज देयर शुड ऑलवेज बी अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड दैट्स व्हाट आई फील. Coming to an end, just be happy with what you have, whatever you have, who you are. और एक दिन में नहीं होगा ये, but the time you will think to give it a shot, trust me guys, that will be the time you have already started to build up your confidence. So yeah, that's it for today's video. If you like the video, then don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, because that's the only way you can show love and support to me. Feel free to comment down below. Till then, be happy, stay safe, and I'll see you in my next video. Bye guys.